सबसे पहले डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, it involves a shift from single cropping system to multi cropping system. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में कह रहे करो फार्मिंग ही करो, बट सिंगल क्रॉपिंग से मल्टी क्रॉपिंग पे जाओ, सिक्योरिटी एनहांस हो जाएगी, इनकम की हायर इनकम लेवल्स होंगे. डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट इन क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू कैश क्रॉप्स. फूड ग्रेन्स क्या होते हैं? दे आर द ग्रेन्स ग्रोन फॉर ह्यूमन फूड. एग्जांपल राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस. कैश क्रॉप्स आर फॉर डायरेक्ट सेल इन द मार्केट. रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हम बना रहे हैं, रादर देन फॉर फैमिली कंजम्पशन और टू फीड लाइफ स्टॉक. उसके लिए नहीं, आप सेल करने के लिए. कॉटन, जूट, कॉफी, शुगर केन, नॉट मेंट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, इट इज मेंट फॉर सेलिंग इन द मार्केट. Shifting from food grains to cash crops. Basically, the main aim is to promote shift from subsistence farming to commercial farming. Subsistence farming to commercial farming. Subsistence farming is the practice of growing crops only for one's own use. Subsistence farming में आप farming कर रहे हो, but purpose क्या है? For own use. मार्केटेबल सरप्लस जनरेट करने का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका. मार्केटेबल सरप्लस मतलब यू आर प्रोड्यूसिंग मोर देन योर पर्सनल रिक्वायरमेंट. आप मार्केट में उसको बेचना चाहते हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो. सबसिस्टेंस फार्मिंग से शिफ्ट हो रहे हैं कमर्शियल फार्मिंग में. सबसिस्टेंस फार्मिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ओनली फॉर वंस ओन यूज विदाउट एनी सरप्लस फॉर ट्रेड. So diversification involves a shift in the cropping pattern from food grains to cash crops and from subsistence farming to commercial farming. Diversification. Second, in India, agriculture is still dominated by subsistence farming, and farmers give prime importance to cereals like wheat, rice, maize, etc. in the cropping system. In India, agriculture is still dominated by subsistence farming, and farmers give prime importance to cereals like wheat, rice. So therefore, diversification is important. Multi-cropping system reduces the dependence of farmers on one or two crops, as they are engaged in growing a wide variety of crops. There is a need to encourage farmers to take up cultivation of a wide variety of crops. It will also raise their income. Diversification would minimize the risk arising due to price fluctuations in the crops. It would reduce the risk occurring due to failure of monsoon. So diversification would minimize the risk arising due to price fluctuations in the crops. करेक्ट. अगर आप एक ही चीज में आप अगर एक्सेस सप्लाई हो गई, एक ही चीज बनाते थे, तो उसके तो प्राइसेस बहुत ज्यादा गिर जाएंगे, फंस जाओगे. करेक्ट. इट इज ऑलवेज बेटर टू डाइवर्सिफाई क्रॉप प्रोडक्शन. इट मिनिमाइजेस द रिस्क. इट encourages the farmers to take up cultivation of wide variety of crops. It reduces the dependence of farmers on one or two crops only. तो डाइवर्सिफिकेशन दो तरीके की है. एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. अभी हमने क्या करा? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन.